So a very good evening to all of you and welcome to Career Launcher. So in today's class, we have actually scheduled a special class where we will be discussing the quiz related with the Indian Constitution. तो आज के क्लास में हम लोग क्विज जानेंगे, मतलब क्विज डिस्कस करेंगे, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड. अगर आपने हम लोग की क्लास देखी होगी, इफ यू हैव वॉच्ड आवर क्लासेस इन द लास्ट 3-4 वीक्स, we have done a lot of article or videos or classes on constitution, like different 25 parts of the Indian Constitution. Then we had discussed about 12 schedules, right? Then we had discussed about, let's say, amendments of the Indian Constitution. We had discussed about 42nd Amendment, etc. So that is why I have decided to discuss quiz on those classes. ठीक है, जो भी वो सब क्लास मैंने किया था उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर कराऊंगा. In today's class, I will not be explaining anything because all these questions I have already explained. ठीक है, तो ये सब मैंने already explain कर रखा है, बस ये revision होगा, fast revision that will be. So I believe that you all should be answering it. Yes, am I audible, visible? Yes, good evening, Priyanshi. My voice is reaching? आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? If yes, then please write yes. So basically, first of all, please subscribe to our channel. और हम लोगों ने बहुत सारी क्लास ऑलरेडी कराई है, सो गो टू द लाइव सेक्शन. ठीक है, एंड वी हैव डन क्लासेस ऑन 42nd अमेंडमेंट, वी हैव डन क्लासेस ऑन 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव डन क्लास अबाउट नालसा, ठीक है, बोरोड फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ठीक है, देन ऑल अबाउट आर्टिकल 21 एटसेट्रा. सो ये सब क्लासेस फिर 12 इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई हैव ऑलरेडी डन दीस क्लासेस. So I'll be asking questions only from here. So I will not be explaining today because of course आपको सब आता होगा, नहीं तो आप जाके देख सकते हो. But आज हम लोग सिर्फ question आंसर करेंगे, ठीक है? So let us begin with the first question and please answer me fast because we have already done it. हम लोगों ने already कर रखा है ये सब, तो इसीलिए मैं बहुत डिटेलली एक्सप्लेन करूंगा. ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स होते थे आपको बताना है, and currently how many parts are there. This also you need to explain. Yes, Priyanshi, go ahead. So originally we had 22 parts. Now we are having how many parts? Originally articles कितने थे and schedules कितने थे, ये सभी बताना है. Please keep on answering me. हाँ, currently we are having 25 parts. How many articles were there originally? How many schedules were there originally? Please tell me. I'm waiting for the response. Yes, originally we had how many? 395 articles. Yes, 8 schedules. Yes, Priyanshi, Goel, very good. So this is what you should be knowing. हम लोगों ने already पढ़ा रखा है. 395 articles, अब 448 articles are there. 22 parts. Now we are having 25 parts and 8 schedules. Now we are having 12 schedules. ठीक है? We have already done it. The next is part 1 of the Indian Constitution talks about what? और कौन से article हैं? Which articles are there? Please tell me. Yes, good evening. I will not be explaining because ये सारी चीजें मैंने पढ़ा रखा है. This is just a revision or a sort of a question and answer, and you have to answer it fast. Yes, Priyanshi, Goel, very good. Union and its territory. How many states are there and how many union territories are there? Please tell me. This is a previous year question, and I expect everyone to know. Yes, Kushagra Saxena, you're also right. Part 1, Article 1 से 4 के बीच है ना? और which of them actually talks about this? ये काफी न्यूज में था. इंडिया that is भारत shall be union of states, जब इंडिया भारत कंट्रोवर्सी हुआ था, है ना? So it was there in the news. Yes, 28 states and 8 union territories. Yes, Kushagra and Priyanshi, you both are right. So we are having 28 states plus 8 union territory. Yes, Kushagra, Priyanshi, you both are right. Article 1 of the Indian Constitution. अब मेरा एक सवाल है कि the term Bharat has been taken from where? And the term India has been taken from where? Because एक टाइम पर एक 1.5 साल पहले ये कंट्रोवर्सी थी काफी न्यूज में, almost 1.5 years back or maybe 1 year back, that India Bharat controversy, whether it should be called as India or Bharat. But Article 1 says that India, that is Bharat, shall be union of states. India word कहाँ से लिया गया, किसने दिया है, और भारत word किसने दिया है? That is, हाँ, भारत फ्रॉम वैदिक कह सकते हो. हाँ, महाभारत या भारत क्लैन भी था एक, ठीक है, उस जमाने में, है ना? सो यू कैन से वहां से भी लिया सकता है, ठीक है, फाइन. वैदिक कम्युनिटी,
Yes, Mariam, Safir, Priyanshi. Yes, Kushagra. And what about India? India word कहाँ से लिया गया? This is very very important. I would say this is important. ये वाला एग्जाम से पूछा आता है इससे रिलेटेड. हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज फॉर इंडिया, तो लेकिन इंडिया नाम लिया कहां से, आया कहां से? ग्रीक्स. वेरी गुड. Yes, Kushagra. Very good. Now I have one question. So basically there was an ambassador in the court of an Indian king who wrote a book called as Indica. And from here the name India has been taken. And who was the person? Name the ambassador, the Greek ambassador. And this Greek ambassador was sent by which king in the court of which king? कौन से राजा? Yes, Megasthenes. Great, Kushagra. Very good. Megasthenes was a Greek ambassador sent by which king in the court of which king? बताइए कौन से राजा के द्वारा भेजा गया था और किस राजा के दरबार में? Yes, Mariam Safir, you are also right. Megasthenes wrote a book called as Indica. Now Indica is a car also. I hope you are aware, in the court of Chandragupta Maurya. Great, Kushagra. Very good. Priyanshi, हाँ. Sent by whom? किसने भेजा था? कौन थे? उनका नाम क्या था? Because these are asked in the exam. Maurya Empire. Yes. So basically, okay, let me tell you. This is India. More India. Okay, let me make it clearly. ठीक है, ये आज का इंडिया है. So somewhere here you will find this Mauryan Empire. ना बिहार ही पे है ना. So Mauryan Empire capital पाटलिपुत्रा होती थी, which is today Patna. And here actually, और यहाँ पर Greek ambassador, Greek king था, उसका नाम क्या था? Name the Greek king who sent Seleucus Nicator, who sent Megasthenes. So the name Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus Nicator, the successor of Alexander the Great. Class on GI tax. अच्छा Kushagra, I will write it in my notes. I think GI tax पे क्लास लिया है पहले. आप जाके YouTube पे सर्च करना GI tax career launcher law entrance. You will get the video, I'm sure. As far as I could remember, but 5-6 महीने पहले लिया था. तो अभी recent update शायद नहीं होगा, but आप चेक करना मिल जाएगा. So Seleucus Nicator was a Greek king who sent Megasthenes in the court of Chandragupta Maurya. So Chandragupta Maurya rule था उसके जमाने में, ठीक है. So basically the word India has been derived from, it was given by Greek. मैं क्यों बता रहा हूँ? Because when India Bharat controversy was happening, I saw many news channels saying कि British का है, British legacy. No, it is not British legacy. India, the word India has not been taken from British. We have taken it from Greek. ठीक है. So factually correct statement आपको पता होना चाहिए, ठीक है. So one is the right answer. पर ये बात आ गई तो मैंने बता दिया. इसलिए ये सब पूछते हैं. अच्छा एक चीज और बताओ. चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में there was a very famous advisor. What is his name? A very famous advisor. Advisor का नाम क्या है? And he wrote a very famous book also. Advisor का नाम और उस किताब का नाम बताना है. Yes, चाणक्य. Yes, Mariam Safir, right? चाणक्य या कौटिल्य भी कहते हैं ना. And the name of the book is Arthashastra. Yes, Kushagra, very good. Priyanshi, go ahead, right? Arthashastra. Yes, Maverick, good. You all right? ठीक है. So ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए because these are the things which are generally asked in the exam. ठीक है. Now the next is which article in the Constitution gives Parliament the power to change the boundary of the states. देखो ये अभी हुआ था जैसे अगस्त 2019 में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी स्टेट वाज चेंज्ड इनटू यूनियन टेरिटरी. और आज ही मैं देख रहा था मिस्टर अमित शाह, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हैज सेड दैट वी विल ट्रांसफर द जम्मू एंड कश्मीर बैक टू स्टेट्स वेरी सून. तो ये बात आ रही थी कि हाँ हम लोग यूनियन टेरिटरी से फिर वापस स्टेट बनाएंगे. वी हैव प्रॉमिस्ड. सो द राइट आंसर इज आर्टिकल 3. यस Kushagra and Priyanshi, you both right. Parliament may by law provide for naya state, creation of naya state, alteration of boundaries, है ना. So these are the things. Yes, Mariam, very good. Priyanshi, Vidita, Kushagra. Article 3 है, ठीक है. C is the right answer. Now part 2 deals with what? Please tell me. ये सब मैंने already पढ़ा रखा है. I have already taught, so I believe you all should be answering. Yes, great. Citizenship. Yes, Kushagra, Priyanshi, Mariam, Safir, you all are right. Article 5 to 11 talks about. और एक law भी है Citizenship Act 1955, है ना. उससे related एक section 6A है which was in the news because Supreme Court recently upheld it, which is related with Assam Accord. इसको पढ़िएगा जाके. We have already taught this.
so I'm not repeating here. The next is part 3 deals with, actually ऐसे नहीं लिखते हैं, part 3 ऐसे लिखते हैं, रोमन स्टाइल में ऐसे लिखा था, ठीक है. Deals with what? Fundamental rights, union, the union, DPSP, cooperative society. ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को. I mean, I believe that you all should be answering it. And which articles? Fundamental right, yes. Article 12 to 35 है ना? ठीक है, yes. Many people have answered yes. Vedant, Goel, Mariam, Kushagra, Vedita. So right, is the right answer. ठीक है. So fundamental rights talks about that. ठीक है. These are the 6 fundamental rights we have already discussed. अगर कभी separate मौका मिलेगा, we'll be having a separate class. The next is part 4. ऐसे भी चलता, but it is better to write like this, है ना? Because generally they write in Roman. Of the Indian Constitution deals with what? Fundamental duty, union, the union, DPSP, cooperative society. What is the answer? Our articles we batate jaye, be very happy. Yes, Priyanshi, Vedang, Kushagra. You all right? DPSP, Directive Principle of State Policy. Pariyam, you all right? 36 से 51 में देता 12 to 35 हो गया ना, तब आर्टिकल 36 से 51 होगा ना, है ना? तो फंडामेंटल राइट्स अभी मैंने बताया 12 से 35, उसके बाद वाला से आगे ना, so 36 से 51 is DPSP. ठीक है, C is the right answer to this question, है ना? मेन जो उसका डेफिनेशन वगैरह है सारांश यहाँ लिखा हुआ है 37 में कि what is actually DPSP, non enforceable etc. I hope you are aware of that. ये तो पता होगा कि non enforceable होता है. The next is part 4A. देखो A कैपिटल A लिखा है, इसका मतलब इंसर्टेड लेटर ऑन बाय विच अमेंडमेंट? लेटर ऑन बाय विच अमेंडमेंट बताइए? एंड विच आर्टिकल? यस, वेदिता, कुशाग्रा, प्रियंशी, ऑल राइट. इट इज फंडामेंटल ड्यूटी एडेड बाय विच अमेंडमेंट? वेदांग, मरियम, यू ऑल राइट. 42nd amendment. Yes, Vedita, Mariam, you all right. 42nd Amendment, 1976. Which amendment हो गया? हाँ, आर्टिकल बताइए. आर्टिकल, which आर्टिकल? सिर्फ एक ही आर्टिकल है, सारा उसी में मेंशन है. तो ऐसे सोचो, आर्टिकल 36 से 51 है, उसके बाद 52 आ जाता होगा यूनियन में, पार्ट 5 में यूनियन में. हाँ, और ये बाद में ऐड किया गया, बीच में घुसाया गया. तो ऐसे सोचना. देखो, पार्ट 3 इज फंडामेंटल राइट में, आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ. पार्ट 4 इज डीपीएसपी, और डीपीएसपी है 36 से 51, 36 से 51, और ये 12 से 35. उसके बाद पार्ट 5 आ जाता है यूनियन, द यूनियन, दैट इज 52 से स्टार्ट होता है ना. अब बीच में इंसर्ट किया गया समथिंग, सो वी इंसर्टेड पार्ट 4A. अब कैसे ऐड करेंगे? तो जो 51 है, इसका 51 कैपिटल A डाल देंगे, राइट? यस प्रियंश, वेरी गुड. So this is actually part article 51 capital A. So when it was inserted 10 fundamental duty. Later on, one was added by 86th amendment, which is related with education, right to education and all. ठीक है? So 10 था, 11वां लास्ट में ऐड कर दिया गया बाद में. Yes, Kushagra, you are also right. So this is how you should remember it. वैसे मैंने ये सब already पढ़ा रखा है, so I believe that you all should be answering. The next is part 9 deals with what? पार्ट 9 क्या से डील करता है ना? प्रोमिनेंट वंस पता होना चाहिए. जैसे पार्ट 9 देखो, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से रिलेटेड, इसे पता होना चाहिए. पार्ट 9 इज रिलेटेड विद म्युनिसिपैलिटी, सॉरी पंचायत, पहले विलेज पंचायत आता है ना. एंड पार्ट 9A जो इंसर्ट किया गया, दिस इज डील्स विद म्युनिसिपैलिटी. सो द राइट आंसर इज डी, है ना. सो पंचायत जो है पार्ट 9 से रिलेटेड डील करता है. ठीक है, so that is what you should know. So D is the right answer to this question. 9A से related है, फिर 9B is related with cooperative society and all. Yeah, है ना, आप देख सकते हो. तो उसमें अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है. I hope you are aware, ग्राम सभा, है ना. The next is how many new keywords were added by 42nd amendment. देखो, मैंने 42nd amendment पे पूरा सेपरेट क्लास लिया है. I discussed that it is a mini constitution. तो प्रीएम्बल में कौन से वर्ड्स ऐड किए गए थे, ये सब आपको पता होना चाहिए. Yes, Vedita, Mariam, Kushagra, Priyanshi, all right. कौन से 3 words हैं? Yes, Vedita, great, very good. Which of the following is not the word added in the preamble by 42nd amendment? Socialist, secular, integrity. Great, Priyanshi and Vedita, very good.
socialist, secular, integrity was added. So sovereign पहले ही से था, it was already present. So here the right answer is B. Yes, PNC, Mariam, Koshagara, you are right. तो मैंने आपको यहाँ कंपैरिजन करके भी दिखाया था. आई स्टिल रिमेंबर कि देखो यहाँ सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक लिखा है, यहाँ सोशलिस्ट सेकुलर ऐड किया गया है. ठीक है. सिमिलरली यहाँ पर यूनिटी ऑफ इंडिया लिखा है, यहाँ पे देखो इंटीग्रिटी वर्ड एडेड है. पहले यूनिटी ऑफ द नेशन में इंटीग्रिटी भी हैव एडेड. So 3 words, socialist, secular, and integrity were added later on. Yes, so these are the things you should be knowing. Which of the following DPSP was not changed or added by 42nd Amendment? So 42nd Amendment से नहीं चेंज किया गया था. कौन सा DPSP? 39 capital A, 43 capital A, 39, 43 capital B. For the second amendment मैंने पढ़ाया है. Yes, Priyanshi, very good. Right answer is 43B. This is related with cooperatives. और ये 97th अमेंडमेंट से डील करता है. उसमें आर्टिकल 19(1)C में ऐड किया गया है ना. फिर 43B में एडिशन हुआ. पूरा पार्ट 9B ऐड किया गया. ठीक है. बाकी ये सब जो ऐड किया गया है 42nd अमेंडमेंट से. यस प्रियांशी, गो एंड यू आर राइट. ठीक है. सो 39 आर्टिकल 39 वाज ऑलरेडी प्रेजेंट, मैंने आपको बताया था. लेकिन 39 में ये वाला स्टेटमेंट ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड है. ठीक है. फिर 39 कैपिटल ए में फ्री लीगल एड, जिसमें मैंने नालसा की पूरी क्लास ही ली थी. दिस वाज एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट. नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, लीगल सर्विसेज एक्ट 1987. ठीक है. सो दीस आर द थिंग्स. फिर 43 कैपिटल ए रिलेटेड विद पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री. होता है ना, ट्रेड यूनियंस वगैरह, वर्कर्स का भी से हो, है ना. दैट वाज आल्सो एडेड. 48 कैपिटल ए टॉक्ड अबाउट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन. इनफैक्ट इसको इंप्लीमेंट भी किया गया. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1996. अब तो बहुत सारे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, इतना सारा लॉ बनाया गया. सेंटर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इज सेट अप अंडर एयर एक्ट. सब जानते ही होंगे, है ना, आप अखबार पढ़ते होंगे. एक एयर एक्ट एक्चुअली बहुत लंबा सा, एयर और समथिंग करके फिर एक्ट है बीच में. एयर एक्ट लिखते हैं. वाटर एक्ट 1974, है ना. सो ये सब वही चीज है. एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए तो लॉज बनाया गया. वी आर हैविंग सेपरेटली सेट अप नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. पूरा एनजीटी ही बना दिया गया. इट इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिब्यूनल व्हिच एक्चुअली लुक्स इनटू द एनवायरनमेंट मैटर्स एंड ऑल. ठीक है. Now we are having environment ministry also. इससे ज्यादा और क्या चाहिए, है ना. So these are the things also. But yes, ये तो बना दिया गया. We need to implement those things. We have made the laws, we have made the ministries, we have made the tribunals. Now we have to implement it successfully. That is the idea. चलो आगे चले. How many fundamental duties were there added by? अब चलो इसको आंसर करो. Please read it carefully and then answer me. यहाँ पे गलती मत कीजिएगा. Please read it carefully and then answer me. 42nd amendment के द्वारा कितना ऐड किया गया था? 10. ये पूछा जा रहा है. Currently 11 है, बाद में 1 was added. So be careful, है ना. तो ये छोटी छोटी चीज एग्जामिनेशन हॉल में जो आता है वो गलत हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए. ठीक है. So the very idea is why I'm repeating it, और मैं बार-बार क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये चीज का ख्याल रहे कि हाँ आता हुआ क्वेश्चन एटलीस्ट गलत नहीं हो. तो बहुत खल जाता है, बहुत अफसोस आता है एग्जाम में. Yes. So many people have answered. Very good. Mariam, Koshagra, Priyanshi, Anusha, you all are right. हाँ, one was added later on. So ये वाला बाद में ऐड किया गया था. And it shall be the duty of every citizen of India, है ना. ये सब पूछ सकते हैं. फंडामेंटल ड्यूटीज फॉर सिटीजन एंड नॉन सिटीजन बोथ. नहीं, सिर्फ सिटीजन के लिए फिलहाल है. ऑफ कोर्स फंडामेंटल ड्यूटी, और ये नॉन जस्टिफिएबल है एंड ऑल. द नेक्स्ट इज व्हिच आर्टिकल वाज इंसर्टेड लेटर ऑन बाय 42nd अमेंडमेंट फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज. देखो गौर से पढ़ना. सच्चाई ये कि 31C में भी 42nd अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस किया था. 31C was brought by 25th amendment, but later on they did also some changes. लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है inserted for fundamental duty, तो होगा 51 capital A, right? You have to read the question completely. Yes, Kushagra, Priyanshi, Anusha, you all are right. B is the right answer to this question. और ये fundamental duties. अच्छा, एक और डिमांड थी बच्चों की कि सर आप कमिटी पे क्लास लो. So next week we'll be having a class on committees, famous committees. फिर मैं parliamentary committees उससे पढ़ाऊंगा. Like joint parliament, अभी आज न्यूज में था. In today's editorial we had seen PAC, Public Accounts Committee was in the news, which looks after CAG reports. So similarly JPC होता है, joint parliamentary committee, select committee, etc. So estimates committee is there. So these are the committees we will discuss. और जो famous committees रही है, हाँ इसमें तो आंसर है सोरेन सिंह कमेटी. Yes, Priyanshi, Mariam, you all are right. Kushagra, B is the right answer.
Okay, the next one is the provision of 368 clause 4 and 5. इसमें क्या था? Unlimited power of parliament without judicial review. मतलब parliament चाहे when will next week Vidita? Next week either on Tuesday, Wednesday or Thursday. इसी एक में लूंगा. ठीक है. So so basically article 368 clause 4 and 5 means कि we have full power, parliament has power to change anything in the constitution, no judicial review etc. But it was struck down, ठीक है, in Manerva Mills case, ठीक है. केशव नंदा भारती केस इसलिए नहीं होगा, देखो 42nd amendment 1976 में आया था and this is 1973, ठीक है. So that is what you have to understand कि उसके बाद फिर आएगा ना. हालांकि केशव नंदा भारती में they gave the concept of basic structure but still parliament brought this, ठीक है. So this is what you have to know, ठीक है. और इसे बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन is made on the bedrock of balance between fundamental rights and DPSP. Because मैंने बताया था आपको, if you are aware of that, नहीं, right to property was removed in 1978, 44th amendment. Vidita, that was during Janata Party government. ठीक है, 44th amendment. Is it no, it's not violative because the Supreme Court has not said that right to property is a basic structure. ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है, इसीलिए. तो we will have a class. अच्छा, चूंकि आपको confusion है basic structure में, if I will get time, तो I will schedule a class for that also, basic structure, ठीक है. No, not all fundamental rights are in basic structure. Vedita, सारे फंडामेंटल एक एक लाइन से नहीं बोला गया कि सारे फंडामेंटल राइट्स एक एक लाइन से है. प्रोमिनेंट वन से जैसे आर्टिकल 32 है, 14 है, इस तरह, ठीक है. सो इसलिए दैट इज व्हाट यू शुड नो. अच्छा, आप उस एंगल से सोच रहे होगे कि फंडामेंटल राइट्स को बेसिक स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया तो कैसे हटाएंगे? नहीं, नॉट ऑल फंडामेंटल राइट्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. सो सी इज द राइट आंसर, ठीक है. उसको डिक्लेयर किया कई सारे जजमेंट्स में कि दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, देन दिस इज बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है. सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. तो ये दोनों था ना, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट कि दोनों को स्ट्राइक डाउन कर दिया था. The next one is 331 capital C inserted by 42nd amendment. ओरिजिनली इसको इंसर्ट किया गया था 25th amendment में, and we had discussed it that for implementing 39B and C, 14 and 19 which is a fundamental right can be violated. मैंने बताया था, but ये कुछ आगे ही निकल गई. इन्होंने कहा कि for implementing any DPSP 14 and 19 can be violated. Then Supreme Court said आधा हो गया कुछ, है ना. That is also in Minerva Mills case. Yes. So Supreme Court said कि आप इतना ज्यादा मत आगे निकल जाओ, और वही कहा था कि the Constitution is formed on the bedrock of the balance between fundamental right and DPSP. We need to balance both, right? यही मैंने स्टेटमेंट लिखा ना यहाँ पे. So we need to balance fundamental right and DPSP, and it said कि नहीं, अब इतना ही रहने दो, except that not all DPSP but 39B and C. Only for implementation of 39B and C, 1419 can be violated, which is a fundamental right. MC Mehta case related with environment. Yes, Kushagra, very good. ये दोनों फांसी से रिलेटेड है, डेथ पेनल्टी, ठीक है. फाइन. The next one is which of the following is not the subject that was transferred from state to concurrent list? I hope you are aware. I'm talking about 42nd amendment. During Indira Gandhi time, I think 5 things were transferred from state list to concurrent list. इसमें से कौन सा नहीं है? Which one of them is not? Yes, Priyanshi, Kushagra, you both are right. Marriage शुरू से था, है ना. Anusha, you are right. So it was there since inception, है ना. Education, forest, weights and measures, protection of wild animals, birds, and administration of justice. ये 5, these 5 were moved from state list to concurrent list to state list to concurrent list, and that is why the Chief Minister of Tamil Nadu was demanding that it should be brought back from concurrent list to state list. The next is दो ऐसे parts से 2 parts were inserted. We had 22 parts, now we are having 25 parts. तो बहुत सारे नए parts add किए गए, part 7 हटा भी दिया गया. Then some parts were changed, etc. So 2 parts were added by 42nd amendment. One is part 4A, which is fundamental duty. There is another one more talking about tribunals, which is part 4A. Part 14A, sorry. So basically that is what you should know. तो आसान भी याद रखना. देखो ये वाला 4A हो गया, this is fundamental duty, और part 14A हो गया, ये ट्रिब्यूनल हो गया.
So it's easy to remember now. आयो 4a और एक है 4a में आगे x लगा दो 14 है. So you can remember it. So these two are the so tribunals है ना, आपने सुना होगा जैसे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बहुत फेमस होता है, सब इसके अंदर में आते हैं. The next is which of the following is considered as reaction to 42nd amendment that was brought by जनता पार्टी गवर्नमेंट, राइट. इसमें हुआ ये था, they changed many things. जैसे इन्होंने आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी में कुछ कंडीशंस लगा दी. They made national emergency invoking slightly difficult, और थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, ऐसे समझ लेना. Like they changed the term internal disturbance to external aggression. वही right to property यहाँ change किया. Abolished it as fundamental right. Now it is considered as legal right या constitutional right कहेंगे. Ideally इसको constitutional right कहना चाहिए, but I have seen many exams they are writing it legal right also, but it should be considered as constitutional right. Yes, 42nd amendment मानी constitutional right. हाँ, armed rebellion vote कर दिया. Yes, Namo, right. Yes, Priyanshi, great. So ये सब चीज पता होना चाहिए. और भी बहुत सारी चीजें एडवाइस से रिलेटेड 75 अगर और बहुत सारे आर्टिकल्स चेंज किया. 44th amendment actually changed many things. So basically try to undo it, not 100%, but yes, बहुत सारी चीज रिवर्स करने की कोशिश किया है ना, जनता पार्टी गवर्नमेंट एंड ऑल. The next is article 21 is related with what? इस पर मैंने पूरी क्लास ली थी and I had discussed about expansion of article 21 by Supreme Court. कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका इंटरप्रिटेशन काफी एक्सपैंड किया है, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज डाली है ना, ये तो पता होगा. Right to life and personal liberty. The state shall not deny right to life and personal liberty except according to the procedure established by law. Yes, Priyanshi, Namo, Anusha, Kushagra, Vidita, you all right है ना. और बाद में एक सुप्रीम कोर्ट ने इस को इंटरप्रेट किया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ. कौन से जजमेंट में? हाँ, ये आर्टिकल 20 से रेड ऊपर वाला. यस यस विदिता, ग्रेट, वेरी गुड. इसका मतलब तो तैयारी कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो. आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि यू ऑल आर आंसरिंग इट, एंड आई एम हैप्पी टू सी बिकॉज़ आई हैव वर्कड वेरी हार्ड इन द लास्ट 2-3-4 वीक्स टू कम अप विद गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड व्हेन यू आर आंसरिंग इट आई एम फीलिंग हैप्पी कि चलो मेरी मेहनत काम आ रही है, आप लोग आंसर कर रहे हो, है ना. फंडामेंटल राइट्स, कौन से फंडामेंटल राइट को सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया है इंटरप्रिटेशन को? सो बताओ. निकी गोपालन, यस विदिता, ग्रेट. यस, आर्टिकल 21 को सबसे ज्यादा एक्सपैंड किया गया है ना, ये मैंने बताया था कई बार, इसका खूब इंटरप्रिटेशन निकाला गया है ना. सो है ना, दैट इज व्हाट यू शुड नो. ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मैंने पूछा, सो इट्स मनेका गांधी केस है ना. द कांसेप्ट ऑफ रीजनेबल, फेयर एंड जस्ट लॉ शुड बी देयर एंड ऑल. ये जॉन लॉ की फिलॉसफी पे बेस्ड है. दिस आल्सो हैड डिस्कस्ड. यस, ओ वेलकम प्रियंशी, आई एम वेरी हैप्पी टू सी योर रिस्पांस, ठीक है. द नेक्स्ट इज आर्टिकल व्हिच कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी. ये भी ओरिजिनली नहीं था, आपको पता है. दिस वाज आल्सो एडेड बाय 44th अमेंडमेंट. मैंने बताया ना कि नेशनल इमरजेंसी जब लगा उसके बाद काफी हंगामा हुआ. सो व्हेन जनता पार्टी गवर्नमेंट केम टू पावर, दे मेड अ लॉट ऑफ सेफगार्ड्स ऑन आर्टिकल 352. उसमें से एक सेफगार्ड ये था कि आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी वायलेटेड. व्हाई? और इसके बैकग्राउंड में एक जजमेंट है, एडीएम जबलपुर केस, काफी क्रिटिसाइज किया था सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए. दैट 4:1 द सुप्रीम कोर्ट सेड कि यस, even during national emergency habeas corpus can be suspended. काफी क्रिटिसिज्म हुआ था. एक ही जज थे, there was one judge who had the spine, Justice HR Khanna. He said कि no, even during national emergency. यहीं से actually 2021 से ही habeas corpus flow करता है, ऐसे 32 से flow करता है, but you can say 21 से भी कुछ हद तक flow करता है. So basically the Justice HR Khanna said कि no, even during emergency. हाँ, and of course he lost the CJI ship, right, Namo? And उनके भतीजा जो है, his nephew is currently the CJI, but we remember him, है ना. So of course he is the right answer. Yes, Kushagra, very good. Habeas corpus case भी कहते हैं इसको, एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस, ठीक है. ओके, है ना. इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी है ना, तो ये हंसराज खन्ना साहब काफी फेमस हुए. The next is right to clean environment was declared as fundamental right under article 21, in which case, तो ये सब पता होना चाहिए. Right to clean environment, right to bury a person of your choice, right to live with dignity, right to die with dignity, right to have health, right to shelter, right to have healthy, clean air, safe environment, है ना. MC मेहता के सी उससे related है, है ना. After Bhopal gas tragedy, this was very much in the news and all, ठीक है. Yes, Priyanshi, Anusha, Vidita, Namo, all right, है ना. फिर right, ये बहुत फेमस हुआ था, ये बहुत बार कई एग्जाम में पूछा गया है. अच्छा पता है, this is very very important. You know why I'm telling you? Because the original petitioner had died on October 2024. तो ये करंट अफेयर्स का पार्ट भी हो गया.
K.S. Pottasamy case. Actually, Justice K.S. Pottasamy, he was a retired High Court judge, retired Karnataka High Court judge. He had filed a petition in the Supreme Court, declared that right to privacy should be declared as fundamental right under 21. Okay? Yes, Kushagra, Anusha, Namo, you are right. 21. हाँ, Priyanshi, yes. तो अभी उनकी डेथ हुई केस पुट्टास्वामी साहब की. आई थिंक काफी उम्र के थे वो, मे बी आई थिंक 75 प्लस ही वाज, एंड ही डाइड लास्ट ईयर इन अक्टूबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. हाँ, नवतेज सिंह जौहर एंड ऑल, यस, उसी पैटर्न पे था. यस विदिता. हाँ, तो इसीलिए आई थिंक इट्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट टू रीड समथिंग अबाउट केस पुट्टास्वामी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21. इट वाज अ 9 जजमेंट ऑर्डर और 9-0 था ये, और सारे जज एक लाइन से कहे कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड नो. अच्छा, अब देखो राइट टू प्राइवेसी जब फंडामेंटल राइट है तो इससे बहुत सारी चीज, जितने भी मान लीजिए लेट्स से एलजीबीटी है, देन दे डिक्लेयर्ड एडल्टरी टू बी आल्सो लीगल एंड ऑल. देन और भी बहुत सारी चीजें जैसे राइट टू चॉइस, राइट टू ईट फूड व्हाटएवर यू लाइक, है ना, और बहुत सारी चीजें जो प्राइवेसी से रिलेटेड है. दे हैड अपहेल्ड इट. द राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस. ठीक है, सो दीस आर थिंग्स यू शुड नो. खैर, तो ये पुट्टास्वामी केस है ना, और पुट्टास्वामी साहब का फॉर्मर जज ऑफ कर्नाटक हाई कोर्ट, इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए भी आपको पता होना चाहिए. अच्छा, इसमें जो सीजीआई थी उस टाइम पर जेएस खेयर साहब थे, और इनको अभी कौन सा अवार्ड मिला है? He was given a very famous award this year. Please tell me. Very famous award. Famous award. Justice J.S. Khair. Padma Vibhushan. Yes, Vidita. Very good. Second highest civilian award. Padma Vibhushan. इस साल मिला है. This year. I have taught a class on Padma Awards. Yes, Padma Awards मिला, लेकिन you have to tell me which one. Padma Vibhushan, Padma Bhushan, Padma Shri. Padma Vibhushan बताना. Yes, Priyanshi Goel. Very good. Second highest civilian award. तो याद रखिएगा. He was the first Sikh Chief Justice of India. First from Sikh religion. ठीक है. हो सकता है क्योंकि केस पुट्टास्वामी की डेथ हुई है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि इसको कौन से जजमेंट को ओवरटर्न किया. एक है खड़क सिंह केस और एक एमपी शर्मा केस. इसमें से एक शायद 6 बेंच का था और एक 8 बेंच का कुछ समथिंग था. इसीलिए इस बार 9 जज बेंच बनाई गई थी, बड़ी बेंच. दैट इज व्हाई लार्जर बेंच वाज क्रिएटेड, बिकॉज़ इन द प्रीवियस जजमेंट खड़क सिंह केस एंड इन एमपी शर्मा केस सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू प्राइवेसी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट. पुराने 1950, 55, 60 का है. तो जब मामला चल रहा था तो अटॉर्नी जनरल ने लेकर के आए, दिखाया लैंडमार्क जजमेंट. अच्छा ठीक है विदिता, वी विल ट्राई टू अरेंज क्लासेस फॉर दैट. आई हैव नोटेड इट. तो उसमें हुआ ये था कि पुराने जजमेंट से अटॉर्नी जनरल साहब लेके दिखाए कि देखिए सर ये पुराना जजमेंट है 6 बेंच का और 8 बेंच का पुराना, उसमें ये लिखा हुआ है. तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा चलो बड़ी बेंच बनाते हैं. सो दे मेड 9 जजमेंट्स. दिस इज द रीजन. और 9 ने एक लाइन से कह दिया, ऑल द 9 पीपल सेड इन वन लाइन दैट एक्चुअली दिस इज अ फंडामेंटल राइट. क्योंकि इनकी डेथ हुई है, हो सकता है ये भी पूछ दें. दैट इज व्हाई आई एम लिटिल बिट एम्फसाइजिंग ऑन इट. थोड़ा सा मौका मिलेगा तो पुट्टास्वामी साहब के बारे में पढ़ लीजिएगा, बिकॉज़ मे बी दे कैन आस्क. और 21 तो एकदम याद रखना है. एडीएम जबलपुर हो गया. राइट टू मैरी पर्सन ऑफ योर चॉइस अगेन फ्लोज अंडर 21. ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ योर चॉइस इज अ फंडामेंटल राइट अंडर व्हिच आर्टिकल. तो 21 और कौन से केस में कहा था, ये भी बहुत फेमस हुआ था 2018 वगैरह में, 2018 अराउंड दैट इट बिकेम वेरी फेमस. यस, नमो कुशाग्रा, यू बोथ राइट. विदिता, हादिया केस 2018. अच्छा, ये दोनों क्या चीज से रिलेटेड है, कोई बता सकता है? ऑप्शन सी एंड डी इज रिलेटेड विद व्हाट? आदिया फ्रॉम केरला. यस, नमो प्रियंशी, चांचल, विदिता, कुशाग्रा, यू आर राइट. शाहबानो केस एंड शाहबानो केस both are almost 30 years apart, 32 years apart. नाम सिमिलर लग रहा है, एलिमनी मेंटेनेंस. हाँ, तो आप तो दोनों एक साथ लिख देना, कौन सा किसमें ये बताओ. शायरा बानो ट्रिपल तलाक. यस नमो. Here instantaneous triple talaq was declared invalid, and this is 2017 judgment. This is 1985 judgment. This is related with alimony laws. इसमें है ना alimony. Yes. विदिता, वेरी गुड नमो. हाँ, ये सब जामिया वगैरह पूछते हैं, जामिया अलीगढ़ सब इंटरेस्ट होता है, सब पूछते हैं. एलिमनी लॉ सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट दैट, है ना. अच्छा, मैंने सॉरी. यस विदिता, प्लीज करेक्ट मी. दिस इज शायरा बानो ना. दिस इज बैनिंग ऑफ ट्रिपल तलाक. दिस इज शाह बानो केस 1985. ठीक है, थैंक्स फॉर करेक्टिंग मी. दिस इज रिलेटेड विद एलिमनी लॉज. आई एम वेरी सॉरी.
इसमें एक आता सुप्रीम कोर्ट ने कि फॉर्मर हस्बैंड हैज टू गिव फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ alimony to the wife, but later on the Rajiv Gandhi brought the law and it said only for 3 months, that is in that period there is actually the maintenance or alimony. ठीक है, तो ये दोनों पढ़िएगा थोड़ा सा. Deleted by parliamentary law. Yes, Vidita, right. इससे रिलेटेड अभी एक रिसेंटली बीवी नागरत्ना, जस्टिस बीवी नागरत्ना की जजमेंट दिया था लास्ट ईयर. शी सेड कि नहीं, alimony has to be given. Yes, no, right. ठीक है, तो ये पता होना चाहिए. खैर, लेट्स मूव ऑन फर्दर. फिर एलजीबीटी राइट्स नवतेज सिंह जौहर, यहाँ पे भी 21 की यूज हुआ. सब वहीं से फ्लो होता है. ठीक है, 21. अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है एग्जाम में, तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि 21 उसका आंसर होगा. ठीक है, बिलीव इट. बट कभी कभी नहीं भी काम करता है. जैसे राइट टू एजुकेशन, अगेन सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, बहुत सारे जजमेंट है. उन्नी कृष्णन केस, टीएमए पाई फाउंडेशन केस, इनामदार केस, मेनी जजमेंट्स द सुप्रीम कोर्ट सेड राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट. फिर बाद में क्या किया, पार्लियामेंट ने अलग से ऐड ही कर दिया. तो पार्लियामेंट एडेड, नहीं भी ऐड करते तो भी फंडामेंटल राइट होता है, बिकॉज़ सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, है ना. यस, वेरी गुड. पी यस, कुशाग्रा प्रियंशी चंचली ऑल द राइट. ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन. देखो ये ध्यान रखना, ये आर्टिकल 19 के अंदर होता है. क्योंकि मैंने पिछले क्लास में बताया था, फिर लास्ट में करेक्ट किया था, बट अगेन आई एम रिपीटिंग इट, दिस इज नॉट 21. अगर 19 और 21 दोनों लिखा रहे, सो मार्क 19. देखो राइट 19 में क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. तो इसी में आता राइट टू नो इंफॉर्मेशन. आई कैन गो एंड आस्क. ये स्पीच से रिलेटेड है ना. ठीक है, तो ये एक्चुअली क्या मैं बताता हूँ. दिस इज पीओसीएल, अभी राज नारायण केस. जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हुआ ये था, फॉर एग्जांपल कोई मान लीजिए मेरे कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ रहा है, तो हमको पता होना चाहिए कि उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, और उनको कितने पढ़े लिखे हैं. सो आई विल गो एंड आस्क हिम. आइडियली मान लीजिए कोई पॉलिटिशियन है फाइट इलेक्शन, आई एम गोइंग, सो आई विल गो टू हिम एंड आस्क. सो मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, कि आई विल आस्क यू प्लीज टेल मी योर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड. So this is related with right to information something. समझ जाओ, इस तरह 19 से याद रखना कि it has some relation with that. So right to information is fundamental right, 19 के अंदर है. ठीक है, अब खींचतान के 21 के अंदर भी कह सकते हो, but if 19 is given, go for 19. ठीक है, that is what you should know. हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड एडीआर केस एक पुराना भी है, नोटा से रिलेटेड आई थिंक है, और एक अभी रिसेंटली लास्ट ईयर भी एडीआर केस है, which is related with quashing electoral bond. Yes, Namo, very good. Great. ठीक है, ADR is actually a NGO, Association for Democratic Reforms, which works for electoral reforms, है ना. इनका बहुत सारे डेटा वगैरह होता है इलेक्शन से रिलेटेड. Sir, but sir, only understand under representation of People's Act, the right to obtain information candidates was reduced. Vidita, I didn't get your question. 1951 में आया था representation of People's Act. वो दूसरा है अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. एसोसिएशन फॉर, ये एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, दिस इज एन एनजीओ. अच्छा, ईवीएम से रिलेटेड पूछ रहे हो प्रियंशी? ना, इट्स नॉट रिलेटेड विद ईवीएम. वो राइट टू इंफॉर्मेशन वाज रिलेटेड विद कैंडिडेट्स डेटा. ठीक है, उस सेंस में कहा गया था. हालांकि अब उसमें अगर हियरिंग चल रहा होगा, आई एम नॉट श्योर ईवीएम पे कहां तक इंफॉर्मेशन की बात है. राइट टू सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, विशाखा गाइडलाइन से जानते होगे. प्लीज द राइट आंसर. लेटर ऑन गवर्नमेंट केम अप विद, पार्लियामेंट केम अप विद पॉश एक्ट. यस, नमो, वेरी गुड. एडीआर फाइल रिसेंटली. ओके प्रियंशी, ठीक है. कांसेप्ट ऑफ कॉलेजियम कब स्टार्ट हुआ, ये सब वी हैव डिस्कस्ड इट, है ना. अगर इनोवेटेड, जो कि अभी न्यूज में फिर अगेन एनजैक कंट्रोवर्सी, जो वो जज साहब के यहाँ पैसा वगैरह मिला, है ना, दिल्ली हाई कोर्ट जज के, उसके बाद ये सब और न्यूज में आ रहा है. एडिटोरियल अगर आपने कल पढ़ा होगा, सो वी हैड सीन एनजैक एंड ऑल. सेकंड जजेस केस में इनोवेट हुआ और एक्सपैंड किया गया. करंटली ये वाला चल रहा है ना. एंड एनजैक इज रिलेटेड विद व्हिच अमेंडमेंट के न्यूज में. अगेन एनजैक, प्लीज रीड एनजैक बिकॉज़ नाउ दिस कैन बी आस्क्ड. ठीक है, एनजैक बताइए. अमेंडमेंट. हाँ, तो ये, हाँ, अभी जो जज साहब का मामला चल रहा है. सो उसके बाद में एडिटोरियल्स में देख रहा था कि लॉट ऑफ एडिटोरियल्स वे टॉकिंग अबाउट कि एनजैक नीड्स टू बी रिवाइव्ड एटसेट्रा, ये वो. तो वो न्यूज में आता है. लेटर ऑन सुप्रीम कोर्ट स्टक डाउन 2015 वगैरह में ना, 4:1. जस्टिस चालमेश्वर ने डिसेंट किया था, बाकी 4 जजेस ने सपोर्ट किया था. एनजैक शुड बी स्टक डाउन. प्रॉब्लम क्या था कि 6 पर्सन्स आर देयर, सो सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जजेस, लॉ मिनिस्टर थे जो कि गवर्नमेंट से, दे बिलोंग टू गवर्नमेंट. तो होता क्या, जब सुप्रीम कोर्ट वाले हियर करती कोई मामला,
2 पार्टी है, उसमें से एक पार्टी बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट होती है, बल्कि 80% 85% केसेस में आपने देखा होगा, आई एम श्योर कि ऑन वन साइड देयर इज अ सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल। आपने देखा कोई भी बड़ा मामला होता है ना तो राय लिया जाता है कि आपकी क्या राय, गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है। So, इसलिए हाँ, सो यू शुड नो इट कि टू इंश्योर की इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं हो, है ना, इसीलिए बहुत इंश्योर किया था, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। फिर दूसरी बात ये कहा गया कि जो 2 एमिनेंट पर्सन है, इन 2 एमिनेंट पर्सन के लिए कमेटी बनाई जाएगी, सीजीआई, प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा। अब ये दोनों जो है थोड़ा सा पॉलिटिकल हैं, तो शायद इसलिए भी जुडिशरी को पसंद नहीं आया होगा, तो जुडिशरी ने उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। सो बेसिकली वी अगेन वेंट बैक टू कॉलेजियम, सो दैट इज द आइडिया। लेकिन ये डिबेट चल रही है, ठीक है। So कॉलेजियम में 5 मेंबर्स होते हैं, यहाँ 6 मेंबर्स थे एंड ऑल। So this debate is still happening. और देखो that is why of course this can again be asked. So this is all about today's class. Please subscribe to the channel, press the like button, share this video. Thank you everyone. Thanks for watching.